Alright, so in this video we'll be talking about what are Kubernetes and why is there a need for using Kubernetes in the first place. We are also going to be talking about the general intuition and the architecture of the entire Kubernetes process, and in the next video I will be explaining as to how you can use Kubernetes. So the more practical application will be explained in the second video, but in the first video we'll be focusing on what is Kubernetes and why we are actually using it. So for understanding Kubernetes, it is very important for you to understand what are Dockers. So if you haven't checked out my video on what are Dockers, do check it out. And if you didn't find my Docker video helpful, then you should be checking out what is Docker and by other YouTube channels if mine wasn't helpful. I would recommend you to watch a video on either Dockers or Kubernetes by this YouTuber called Tech World with Nana, and she's an amazing YouTuber who's basically explaining what is DevOps in very simple terms and in very easy terms. And even all of this knowledge material that I've collected is from her videos. So do check it out. Okay, so let's start with what is Kubernetes. So um, अगर हमें याद है कि डॉकर्स हम बेसिकली यूज़ इसलिए कर रहे थे कि हम एक कंटेनर में अपनी एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे थे और उसको फिर हम रन कर रहे थे ना। हो ये रहा था हमारे पास एक मसला, उसके बाद ये स्टार्ट होना शुरू हो गया था कि हम बहुत सारे कंटेनर्स बनाना शुरू कर रहे थे, एंड उसकी रीज़न ये थी कि हम बहुत सारे ना माइक्रो सर्विसेज वाले स्ट्रक्चर पे जा रहे थे। हम क्या कर रहे थे कि हम हर एक कंटेनर को एज अ माइक्रो सर्विस कंसिडर कर रहे थे, और आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज़्यादा माइक्रो सर्विस बननी शुरू हो गई थी कि आपके पास उनको मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, आपको कंटेनर्स को मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। तो उसके लिए हम बेसिकली क्यूबरनेटिस लेकर आए कि हम मैनेज कर सकें अपनी कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस विच आर यूजुअली थाउजेंड्स ऑफ कंटेनर्स, और उनको मैनेज करने के लिए हम बेसिकली क्यूबरनेटिस लेकर आए हैं। तो मैंने बेसिकली यही चीज़ यहाँ पे इलस्ट्रेट की हुई है दैट यू हैव डिफरेंट मल्टीपल कंटेनर्स एंड यू आर मैनेजिंग योर कंटेनर्स यूजिंग अ क्यूबरनेटिस। नाउ हो ये रहा है कि हमारे पास ये ना स्लोली स्लोली एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम प्रॉब्लम बन रही है, क्योंकि आपको कंटेनर्स को मैनेज भी करना है और लाइक कम्युनिकेशन भी करवानी है डिफरेंट कंटेनर्स के आपस में। तो दिस इज़ मोर लाइक अ पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग प्रॉब्लम। और जब आप इस प्रॉब्लम को सही से सॉल्व कर लेते हो तो उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं कि आपके पास हाई अवेलेबिलिटी होती है, कि अगर आप का एक कंटेनर डाउन हो रहा है तो दूसरा कंटेनर बेसिकली उसका काम कर सकता है। तो उससे हो ये रहा है कि आपके पास हमेशा हाई अवेलेबिलिटी होगी। इसका मतलब ये भी है कि स्केलेबिलिटी में भी हमारे पास फ़ायदा आ रहा है कि आप स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हो, कि जैसे आपकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा उस पर लोड बढ़ रहा है तो आपके पास कंटेनर ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, और जब आपके पास इतना लोड नहीं है तो आपके पास नंबर ऑफ़ कंटेनर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं। एंड इट्स ऑल्सो हेल्पफुल इन योर डिज़ास्टर रिकवरी। So let's talk about its architecture as to how Kubernetes is functioning. So सबसे पहले हम बात करते हैं अपने नोड्स पर। सो नोड्स क्या चीज़ होती है? नोड्स आपके पास होती है या तो वर्चुअल मशीन होती है या फिर आपके पास एक फ़िज़िकल मशीन होती है। सो जहाँ पे भी नोड्स मेरे पास लिखे होंगे, दोज आर बेसिकली मशीन्स। एंड हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर, मास्टर स्लेव का। तो मास्टर स्लेव का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और वो ये है कि आपके पास एक होता है मास्टर, और उसके साथ आपके पास होते हैं बहुत सारे स्लेव्स। स्लेव्स का काम होता है कि कोई एप्लीकेशन रन करना है, कोई काम करना है, और मास्टर का काम होता है कि इनको बेसिकली कंट्रोल करना। ठीक है। और अगर आपके पास एक स्लेव नोड डाउन हो जाता है तो या तो एक और स्लेव नोड क्रिएट करे मास्टर नोड और उसको काम असाइन कर दे इसका, या फिर इसका जो काम है वो दूसरे स्लेव नोड्स पे दे दे अगर पॉसिबिलिटी है। या फिर ये भी होता है कि कभी कभार जब आपका स्लेव नोड शायद डाउन नहीं होता, शायद रीस्टार्ट हो रहा होता है, तो वो रीस्टार्ट होके जैसे ही वापसी आप आता है तो फिर वापसी इसको काम दे देना या इसको लोड दे देना भी इस मास्टर नोड का काम होता है। सो दैट्स बेसिकली व्हाट द मास्टर स्लेव रिलेशनशिप इज़। तो यहाँ पे भी हमारे पास यही रिलेशनशिप है कि हमारे पास एक मास्टर नोड है जिसको हम कंट्रोल प्लेन से कह रहे हैं। ठीक है। एंड देन यू हैव अ लॉट ऑफ स्लेव नोड्स और वर्कर नोड्स ओवर हियर। Now, each of your worker node is going to have this application called kubelet, which is a primary node agent, and this basically allows you to communicate in the cluster. So ये पूरा जो architecture है, so let me just remove that part. ये जो पूरा architecture है जिसके अंदर आपके पास master node है और सारे slave nodes हैं, this you can imagine is in a cluster.
ठीक है। और इस क्लस्टर में नोड्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए वी नीड दिस क्यूबलेट application, and these are then going to be communicated over a virtual network, so they're connected in a virtual network. You यहाँ पे जहाँ पे भी ग्रीन चीज़ हाईलाइट हुई हुई ना यहाँ पर, दैट इज़ बेसिकली अ कंटेनर. सो you will have different containers on different nodes. so एक नोड पर ज़रूरी नहीं कि मतलब like ऐसा नहीं कि सब पे सेम नंबर ऑफ कंटेनर्स होंगे. कुछ कंटेनर्स कुछ नोड्स पर एक कंटेनर होगा, कुछ पे दो होंगे, कुछ पे तीन होंगे. इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच लोड अ पर्टिकुलर नोड हैज़. ठीक है. नाउ कंटेनर बेसिकली क्या है, एक एप्लीकेशन है, राइट. अब हम बात करते हैं कि नोड स्लेव्स की तो हमारी बात हो गई कि वो उसका काम ही ये है कि बस जो भी इसका एप्लीकेशन है उसको एक्सिक्यूट करना. बट मास्टर नोड का यहाँ पे क्या काम है? सो मास्टर नोड में भी यहाँ पे भी जो ग्रीन चीज़ें हैं, दीज आर ऑल कंटेनर्स. द फर्स्ट कंटेनर इज़ द API सर्वर. सो मास्टर नोड के थ्रू भी हमें कम्युनिकेशन करवानी है, राइट. हमें बेसिकली मैनेज कराना है अपना पूरा का पूरा नेटवर्क. हमें ये कंट्रोल करना है कि कंट्रोल नंबर ऑफ़ नोड्स कितने होंगे. ठीक है. अगर एक डाउन होता है तो दूसरा बैकअप होगा और कैसे होगा, और मतलब all of that stuff we need some mechanism to do this. So we can do this with three things: either using a user interface, ठीक है, either using an API or a command line interface. We'll be looking at command line interface more because it gives you more control. ठीक है. सो ये बेसिकली आपके पास तीन प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू आप अपने बेसिकली कंट्रोल करते हो पूरा अपना क्लस्टर. ठीक है. एंड ये बेसिकली आपका एंट्री पॉइंट है क्लस्टर में, राइट, ताकि आप जिससे आप मैनेज कर सकते हो अपने नोट्स को. नेक्स्ट पार्ट आता है आपके पास कंट्रोल मैनेजर. दिस बेसिकली कीप्स ट्रैक ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द क्लस्टर, राइट. कि एक नोड जो है या जो भी आपके पास कंटेनर जो है वो या तो रिपेयर होने की ज़रूरत है या आपका नोड या कंटेनर डाई ऑफ हो गया है. सो ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इज़ being kept in your control manager, and the scheduler's job is to then assign work on the basis of the workload and availability of the remaining nodes. ठीक है. कि कहाँ पर अगर मुझे एक नया कंटेनर प्लेस करना है तो कहाँ पे सबसे कम लोड है और मैं वहाँ पे एक नया कंटेनर प्लेस करता हूँ. सो दैट्स द importance of all of these three containers: the API server, the control manager, and the scheduler in your control plane. The fourth thing is the etcd. so होता ये है आपके पास कि कभी कभार आपके नोड्स डाउन हो जाते हैं या आपके जो कंटेनर्स होते हैं वो डाउन हो जाते हैं. तो उन के सिनेरियोज़ के अंदर जब वो डेटा किसी और नोड पर आप शिफ्ट करते हो या एक नया नोड इंस्टेंस क्रिएट होता है या जब ये नोड रीस्टार्ट होता है या कंटेनर रीस्टार्ट होता है, सो you need to resume from where you last left off. सो उस केस के लिए हम बेसिकली ETCD यूज़ कर रहे होते हैं और वो बेसिकली Kubernetes का बैकिंग स्टोर है कि इट्स बेसिकली स्टोरिंग योर डेटा, इट्स बेसिकली स्टोरिंग योर स्नैपशॉट्स ऑफ द डेटा. ठीक है. वो लॉग फाइल एक मेंटेन कर रहा होता है और जैसे ही वो रीस्टार्ट होता है या बेसिकली वो लोड कहीं और डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो बेसिकली वहीं पे उसका स्नैपशॉट कम्युनिकेट होता है फ्रॉम द मास्टर नोड टू योर स्लेव नोड, और फिर उसको पता चल जाता है अच्छा यहाँ पे लास्ट टाइम हमने छोड़ा था, यहाँ पे इसका लास्ट चेक पॉइंट था और यहाँ से ही हमें रिज्यूम करना है. सो फॉर बैकिंग पर्पसेस एंड फॉर डेटा रिकवरीज यू आर यूजिंग दिस ETCD. So worker nodes are having a higher workload because they are responsible for executing your applications, and it also requires more resources. Whereas your master node is more crucial because if you don't have your master node, then you cannot control anything in your cluster. So master nodes are more important and more crucial, and worker nodes, on the other hand, have more workload on them. That's the reason why they're called worker nodes. Also, you should have two or more master nodes because you want to avoid the problem of having a single point of failure, which is that if your master node dies or if it crashes, then you want a backup master node to keep your system alive and available. Next, we're going to be talking about what is node versus pod. So we have talked about what are containers, right? So pod is basically the smallest the smallest unit in a Kubernetes cluster, not even a cluster, in the entire architecture of a Kubernetes.
and what it is basically it's an abstraction over the container. It creates this layer on the top of it which helps to replace the runtime, so you don't need to work with Docker technology. So what it's basically saying is that कंटेनर जो है आपके पास वो एक डॉकर टेक्नोलॉजी पे काम हुआ है, लेकिन हम उस पर एक और एक एब्स्ट्रैक्शन की लेयर लगा रहे हैं जिससे हो ये रहा है कि ज़रूरी नहीं कि आप डॉकर से ही कंटेनर्स को कंट्रोल करो, आप किसी और रन टाइम के थ्रू से भी आप अपने इस कंटेनर को कंट्रोल कर सकते हो. एंड दैट्स द रीज़न व्हाई वी आर सेइंग दैट नाउ इट्स नॉट अ कंटेनर एनीमोर because it's not entirely dependent on Docker anymore. It is now a pod. So that's what it is. सेकेंडली हर एक नोड जो होता है उसके अंदर हम अब इसको मैं कंटेनर बोलूँ या पॉड करूँ बोलूँ, इट्स द सेम थिंग नाउ. ठीक है. सो आई ट्राई माई बेस्ट टू नाउ से दैट it's a pod, but if I say container you can understand what I'm trying to say. So जो भी आपका पॉड होता है एक नोड के अंदर, वी ट्राई आवर बेस्ट टू हैव ओनली वन एप्लीकेशन पर पॉड, विच मीन्स कि हमारे पास अगर एक एप्लीकेशन है तो ये एक ही पॉड है. ठीक है. we can have multiple containers or multiple pods, sorry, we can have like multiple containers in a pod, but वो most likely आपके पास helper side services होते हैं. So कहने का मकसद ये है कि आपका जो pod है उसके ना आप मल्टीपल कंटेनर्स भी रख सकते हो, लेकिन यूजुअली होता ये है कि आपके पास एक कंटेनर में एक ही एक ही पॉड के अंदर एक ही कंटेनर होता है. Secondly, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पॉड्स आर एफेमेरल विच मीन्स दैट दे कैन डाई ईजली. अगर ये पॉड डाई ऑफ हो जाता है बहुत आराम से, तो फिर हमें ये बात करनी होगी कि इसका डेटा कैसे बैकअप करना है और डेटा कैसे रेप्लिकेट करना है, ताकि अगर ये डाई ऑफ हो तो कोई और उसकी जगह ले सके एंड योर सिस्टम इज़ अवेलेबल 24/7. Another thing that I'm going to talk about over here, and then we're going to then talk about it in a more detail, is the IP addresses. So आपके पास हर एक pod को एक आप IP address assign कर देते हो, and सबसे पहले I'll tell something which is a bit incorrect and then we'll try to fix it. So अगर हम IP यहाँ पे dynamically assign करेंगे तो एक मसला आएगा, और वो मसला ये होगा कि अगर आपके पास डेटाबेस डाउन हो जाता है या डेटाबेस डाई ऑफ हो जाता है या उसका पॉड मर जाता है, तो आईपी एड्रेस उसकी जब वो डेटाबेस वापसी आएगा तो उसको एक नई आईपी एड्रेस मिलेगी और वो रिकन्फिगर होगी, राइट. एंड दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट एन ओवरहेड. ठीक है. इसके बजाय हम करते ये हैं कि हम बार बार उसकी नई आईपी एड्रेस सेट करने के बजाय हम करते ये हैं कि हम उसको एक फिक्स स्टैटिक आईपी एड्रेस दे देते हैं. उस फिक्स आईपी एड्रेस से फ़ायदा ये होगा कि जब ये डेटाबेस डाउन भी होगा या ये रीस्टार्ट होगा, तो जो नया डेटाबेस या रीस्टार्ट होकर आएगा उसके पास सेम आईपी एड्रेस होगी. So now instead of calling it IP address, we call it a service. And service का काम यही होता है कि service basically एक permanent static IP address दे देता है कि if a DB database dies, the static IP address will remain and it won't need to be reconfigured. So आपके पास जो उसका end point है वो change नहीं होगा. ठीक है. उसका अब एक static IP address है. Then we are going to talk about what are internal and external services. So in internal services, let's talk about external services. So if you want to use your application from an outside source, from an external source, you want it to be an external service. So if you're using your service on your laptop, then it's going to be communicating from an external source because it's coming out from outside to the cluster, right? But we don't want our database to be accessed from the outside as well. We want it to be only be used inside the cluster. So that's the reason why it's called an internal service, right? So you want your my application to be viewed from the outside, so it's called an external service, but you don't want your database to be accessed from the outside, so it is an internal service. And by default जब आप services बनाते हो तो वो internal services by default होती हैं, and if you want to convert it into external, you have to explicitly mention it. Then we're going to talk about what is ingress forwarding. So होता ये है कि यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे आपने एक एंड पॉइंट लिख दिया विच इज़ www.node.ip and then port. So basically ये नहीं है, ये डोमेन नहीं होगी, एक IP एड्रेस होगी, right? So you have an IP address, you have colon, and then you have your port. But what you want to do is in a real life application, you won't, like, nobody's going to remember a set of numbers and digits and all of these symbols. Then
you want to be able to convert it into a DNS, into a meaningful name that you can use. So to do that, we are basically using ingress. So ingress is first of all going to forward your request to a DNS, which is going to be your my application, and then from there it's going to then go to your original IP address. So what I'm trying to say is इंग्रेस के थ्रू होता ही है कि अब आपके पास जो भी आपका एंड पॉइंट होगा, सो लेट्स अज्यूम मेरा एंड पॉइंट है myapp.com, राइट? तो ये बेसिकली आपका क्या है, एक डीएनएस है, ठीक है? इसकी आपने एक वो की भी है, फॉरवर्डिंग का टेबल बनाया हुआ है जिस पे आपने बोला हुआ है कि ये बेसिकली किसकी इक्वल है, 17127.1, ओके आई जस्ट डू द 192.168.1.3 and then let's set its port to 80. तो जब एक यूज़र इस वेबसाइट पे जाएगा और कोई एक रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो बेसिकली ऑटोमेटिकली इस डीएनएस से कन्वर्ट होकर इस ओरिजिनल आईपी एड्रेस पे जाएगी और फिर उसके बाद वो उसको एक्सेस कर सकता है. सो दैट्स बेसिकली इंग्रेस फॉरवर्डिंग. And pods are usually using the service to communicate with each other. So you can see कि यहाँ पर मैंने एक डैश लगाया हुआ है और इसका मतलब ये है कि ये सर्विस, सिंस ये दो प्राइवेट सर्विसेज हैं इनकी अपनी, तो ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं. सो द कम्युनिकेशन पार्ट इज़ बीइंग डन विद सर्विसेज बिटवीन द पॉड्स. Okay, next thing is configuration maps and secrets. So config map आपके पास क्या होती है कि आपके पास लेट्स अज्यूम मैंने एक एंड पॉइंट बनाया हुआ है अपने डेटाबेस का, ठीक है? और अब लेट्स अज्यूम कि मैंने ये एंड पॉइंट का यूआरएल चेंज कर दिया, ठीक है? तो उस केस के अंदर एक नुकसान ये होता है आपके पास क्यूबरनेटीज़ के अंदर कि आपको वापसी बैठ के क्या करना होता है, रीबिल्ड करनी होती है अपनी इमेज. आप पुश करोगे किसी रिपोजिटरी में और फिर पुल करोगे, फिर वो पॉड चेंज होगा. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट्स रियली अ बिग हैसल टू गो थ्रू. सो होता ये है कि यू कैन सेट अप अ थिंग विच इज़ कॉल्ड अ कॉन्फ़िगरेशन मैप विच विल basically take care of doing all of this stuff, and उस केस के अंदर you don't have to manually rebuild the image if your URL gets changed. तो configuration map के अंदर आप क्या करते हो, DB URL को सेट कर देते हो. So for example, if you have MongoDB service and you want to change that to MongoDB, then you can just change it over here and everything gets reconfigured on its own, and you don't need to like rebuild it at all. Configuration maps are only for non-confidential data only, and for confidential data you are going to be using secrets to store your secret data. So for example, your username and password. So configuration maps and secrets basically ऐसी services हैं जिसके through आप क्या कर रहे हो, अपने external आप अपने environment variable set कर रहे हो या आप अपनी property set कर रहे हो एक application की, ठीक है? So that is basically what a configuration map and secret does. The last two things, second last thing that we're going to talk about is volumes. So हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि जब डेटाबेस रीस्टार्ट होता है या डाई ऑफ होता है तो बहुत सारे मसले आते हैं. एक और मसला ये आता है हमारे पास कि अगर डेटाबेस रीस्टार्ट हो रहा है तो उसका डेटा लॉस हो जाता है. डेटा परसिस्टेंस जो होती है वो, इसका मतलब ये होता है कि जब एक चीज़ रीस्टार्ट हो रही है, डाई ऑफ हो रही है, तो उसके डेटा रिकॉर्ड नहीं हो रहा. सो क्यूबरनेटीज डजंट गारंटीज डेटा परसिस्टेंस. यू आर द पर्सन हु इज़ गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर कि डेटा कैसे बैकअप हो रहा है. उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक वॉल्यूम की सर्विस यूज़ करते हैं, और वॉल्यूम के अंदर हम एक स्टोरेज, यू कैन थिंक ऑफ वॉल्यूम एज एन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव विच इज़ अटैच टू योर पॉड, ठीक है? तो लोकल का मतलब ये है कि जिस नोड या जिस क्लस्टर के अंदर है उसके अंदर हमने ये जाके ये स्टोरेज अटैच कर दिया है, ठीक है? या फिर रिमोट भी हो सकता है कि आपका जो क्लस्टर है, ठीक है, उससे हट कर आपने अपनी ख़ुद की स्टोरेज उसके अंदर अटैच की हुई है या क्लाउड स्टोरेज अटैच की हुई है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल कहने का मकसद ये है कि आपका क्लस्टर ये है. सो आई कैन से दिस इज़ माई क्लस्टर एंड दिस इज़ माई ओन, लाइक यू कैन से this is another third party application, और यहाँ पर आपके पास इसकी एक स्टोरेज है, तो आप उसको भी जाके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? या तो ये करो या फिर आप इसके अंदर खुद ही एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दो कि ये इसकी एक लोकल स्टोरेज है जो हर एक पॉड में होगी, राइट? सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर. या तो खुद एक एक्सटर्नल अपनी तरफ से भी लगा सकते हो या एक क्लाउड से भी आप लगा सकते हो. सो आई जस्ट रीड दिस आउट. व्हेन द DB restarts, all the data is lost.
Therefore, we need volumes to store the data and back up when the data is back online. So this like restart button I have shown over here basically is depicting that. So volume is an external hard drive attached to your board, local server, same server node, remote outside Kubernetes cluster. It could be cloud or your own storage. All right. Next, the last thing that we are going to be talking is going to be the deployment and stateful set. So होता ये है कि आपके पास अगर माए आपका pod die off हो रहा है and you want to now create the replica, so जब replica create होता है तो services भी same रहती हैं, ठीक है? Service ऐसा नहीं है कि आपको reconfigure करनी पड़ेगी, same services होती हैं जो attach होती हैं. और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये इसलिए हो सकता है क्योंकि परमानेंट आईपी एड्रेस है, तो परमानेंट आईपी एड्रेस है वो चेंज तो हो नहीं रहा, एंड सिंस दे आर बेसिकली कम्युनिकेटिंग, सो इस तरीके से इसका भी नेटवर्क बहुत सिमिलर तरीके से बन जाता है. एंड यू दिस सर्विस इज़ ऑल्सो हेल्पिंग इन लोड बैलेंसिंग एज वेल. ठीक है कि मतलब अगर इस पे ये डाई ऑफ हो रहा है तो वो बेसिकली लोड यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है. सो सर्विस हैज़ टू इम्पॉर्टेंट things. One, it's responsible for load balancing. It is responsible for setting up a permanent IP address. And a third thing, which is that it also allows pods to communicate with each other. Um, एक और चीज़ ये है कि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ पॉड, राइट? ये आपका काम नहीं है कि पॉड क्रिएट कैसे हो रहा है और आप क्रिएट कैसे करोगे. व्हाट यू आर रिस्पॉन्सिबल इज़ फॉर क्रिएटिंग अ ब्लू प्रिंट विच इज़ कॉल्ड अ डिप्लॉयमेंट. और उसके अंदर बेसिकली आप ये मेंशन कर रहे होते हो कि आपको कितने नंबर ऑफ रेप्लिकास रखने हैं. ठीक है, सो यू आर मोर कंसर्न विद दैट एज कम्पेयर टू यू आर द पर्सन हु इज़ क्रिएटिंग द पॉड्स. लास्ट चीज़ ये स्टेटफुल सेट. सो जब आपके पास एक डेटाबेस डाई ऑफ करता है, पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पे रीस्टार्ट की. अगर डेटाबेस डाई ऑफ हो रहा है तो अगर आपने उसका एक नोड रेप्लिका बनाया हुआ है तो एक मसला ये आ सकता है आपके पास कि इसका डेटाबेस का टाइम और इसका डेटाबेस का टाइम डिफरेंट हो सकता है, विच बेसिकली मीन्स दैट डेटा इनकन्सिस्टेंसीज आ सकती हैं. एक रीड राइट प्रॉब्लम आ सकती है कि इसमें लाइक पुराना डेटा है, इस पर नया डेटा है, लाइक डेटा की इनकन्सिस्टेंसीज आ सकती हैं. तो उस केस के लिए आपका जो डिप्लॉयमेंट का जो रेप्लिका वाला जो सिस्टम है ना, दैट इज़ नॉट मेकिंग श्योर ऑफ दैट इट्स गोइंग टू फेल. सो फॉर दैट वी हैव अनदर सर्विस विच इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड stateful set. So stateful set basically helps you to manage these states, and it helps you to then avoid this problem of data inconsistency. So I'll just read this down. If a database goes down and you have replicas of database, then you can have read or write problem to avoid data consistencies. Therefore, should use stateful set for these applications. So whenever you're using database, you should use stateful set. But another problem is that कि stateful set बनाना और manage करना काफ़ी मुश्किल काम है. So it's a better practice that you keep your database outside of your Kubernetes cluster, and it's much more easier for you to manage that. So as a summary, what is the pod? It's an abstraction of containers, right? It's the most smallest unit in your Kubernetes architecture. What is a service? Service is basically used for three things: permanent IP addresses. It's mostly used for communication, and the third is load balancing. Ingress was basically be using for route mapping, or you could say for forwarding your DNS request to an original IP address. You were using configuration maps and secrets for external configurations. You were using deployment and stateful set for replication of the data. So we've talked about this, that you are basically you are either going to use a user interface, an API or CLI to basically manage and talk to the entire cluster, right? And that's going to be going through the API server, which is your entry point in the cluster. And okay. Now, let's assume कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, और एग्जांपल ये है कि मुझे दो नोड्स बनाने हैं इस टाइप के. ठीक है, सो ये रिक्वेस्ट मैंने CLI के थ्रू भेजी अपनी API सर्वर के अंदर, और कंट्रोल मैनेजर जिसका काम क्या था, ये ट्रैक करना कि क्या हैपन हो रहा है क्लस्टर के अंदर, कौन से कंटेनर को रिपेयर करना है वगैरह वगैरह. ये बेसिकली ये देखेगा कि करेंटली मेरे पास कितने नोड्स हैं, ठीक है, क्या मुझे चीज़ चाहिए और एक्चुअल में क्या है, राइट? सो current state is basically saying what I want, or I could say desired thing, and actually में क्या है. और फिर वो रिक्वेस्ट जाएगी आपके पास स्केजुलर के पास, जो बेसिकली फिर वो स्केड्यूल करेगा सारी चीज़ें. नाउ
to do all of this, you will be needing to configure your configuration file. इस पे हम बात करेंगे again next video के अंदर, जिसके अंदर मैं डिटेल में जाऊँगा कि YAML files. अच्छा, ये सारी जो चीज़ है ना कि एक्सप्लेन करना कि आपका जो ब्लूप्रिंट जो बताना है कि कितने रेप्लिकास होंगे वगैरह वगैरह, दिस इज़ डन थ्रू YAML files. YAML file is a more standardized option. You can also do it with JSONs, but YAML files is more frequently used, so we'll be doing it with YAML files. So for your configuration files or configuration of Kubernetes, there are three things. First is the metadata, the second is the specifications, and the third is the status. Status जो होता है, it is being managed by the Kubernetes itself, right? कि status क्या है, desired चीज़ चाहिए या actual के बराबर है या नहीं है, ठीक है. Specifications के अंदर you're basically telling that how many replicas you want, and metadata again इस पे जब हम आएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा. So this will be explained in the next video. Lastly, let's talk about some of the technologies that we'll be using now. So Minikube is in a nutshell कर ये रहा है कि हमने बात की थी कि हर एक नोड या कंट्रोल प्लेन जो है वो एक बेसिकली एक वर्चुअल मशीन या एक फिजिकल मशीन है. नाउ अब अगर हमें क्यूबरनेटिस चलाना है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वी रिक्वायर डिफरेंट मशीन्स, राइट. जैसे अगर क्यूबरनेटिस तुम्हें यूज़ करना है तो अब तुम्हारे पास तो मसला ये आ रहा होगा कि मैं इतनी सारी मशीन्स कहाँ से लेकर आऊँ, फिर बैठ कर मैं डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर कैसे यूज़ करूँ. सो फॉर दैट यू यूजिंग मिनीक्यूब. मिनीक्यूब क्या कर रहा है, वो अलाउ करता है कि तुम अपना ये पूरा का पूरा क्लस्टर अपने लोकल मशीन पर सेटअप कर सकते हो. kubectl क्या है, it's the command line interface which helps you to create and manage pods and services for your processes using CLI. So ये जो CLI जो था, ठीक है, इस ये basically kubectl है, ठीक है. So kubectl is used to manage any cluster, maybe Minikube cluster or a cloud cluster. तो ज़रूरी नहीं कि आप Minikube clusters ही manage करो, आप cloud clusters भी manage कर सकते हो kubectl से, क्योंकि it's a really powerful tool. एंड इसकी कुछ कमांड्स देख लेते हैं एंड वी आर गोइंग टू एंड इट ऑफ ओवर हियर. सो अगर आपको मिनी क्यूब स्टार्ट करना है, सो यू विल राइट मिनी क्यूब स्टार्ट माइनस माइनस ड्राइवर डॉकर, एंड देन यू गोइंग टू राइट मिनी क्यूब स्टेटस टू सी व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर क्लस्टर. सो दिस इज बेसिकली फॉर स्टार्टिंग एंड डिलीटिंग योर क्लस्टर्स, ठीक है. मिनी क्यूब आप इसके लिए यूज़ कर रहे हो, और मैनेज करने के लिए या कन्फिगर करने के लिए अपने मिनी क्यूब क्लस्टर को आप kubectl यूज़ कर रहे हो. So that was all from this video. I hope this helped and it gave you a small intuition and insight as to what is Kubernetes and how it's working.